Okay, students, so it is very important to know actually what clauses are. Fine. You must have heard these terms often while reading grammar or while reading about sentences, that independent clause, dependent clause. So what actually clauses are? So first of all, we must be aware that what clauses are. Fine. So we are going to start with this clauses actually. So what are independent clause and what are dependent clause, and how they are different from sentences. Okay, so let's begin with this thing, clauses. So students, if we talk about clause, then clause has all the elements which a sentence has, but it is called a clause because it is a part of a sentence. Fine, you can very well see the definition written on your screen. क्लॉज जो है वो उसके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस के होते हैं. सेंटेंसेस के कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अ सेंटेंस मस्ट कंसिस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फाइन, तो क्लॉज में भी वर्ब होगी और हमारा सब्जेक्ट होगा. बट व्हाई देन इट इज डिफरेंट? तो इसे ही सेंटेंस क्यों नहीं बोल दिया जाए? तो नो, क्लॉजेस जो है दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फाइन, अगर आप उसे सेंटेंस बोलेंगे देन इट विल बी सेंटेंस, नॉट अ क्लॉज. फाइन. For example, you can see on your screen, Ram is my brother and Sohan is my cousin. Fine, very renowned examples. You must have heard about these type of examples often. So Ram is my brother and Sohan is my cousin. So you can see the underlined words here. Ram is my brother. First, this is a clause, and then Sham is my cousin. So you can see Ram is the subject and is the verb, and my brother is the complement. In the same way, Sohan is the subject, is the verb, and my cousin is the complement of Sohan, means the subject. So here you can see that here we have used two finite verbs. दो finite verb use हुई कौन सी है? Be की जो forms है, be की form क्या होती है? Is, am, are, was, were. So here we have used is. यहाँ पे हमने is को use किया है. Fine. So in a sentence you can see that two finite verbs are used. तो फाइनाइट वर्ब जहां पे दो है तो इसका मतलब इसमें क्लॉज भी कितने होंगे? दो. फाइन. एंड दीज टू क्लॉजेस दे हैव देयर इंडिपेंडेंट मीनिंग. दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. आप ट्राई करके देखिए, हाइड कर दीजिए सेकेंड वाले क्लॉज को. राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है, ये कंप्लीट मीनिंग है. देन आप फर्स्ट वन को हाइड कीजिए, सोहन इज माई कजिन, सोहन मेरा कजिन है, ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है. सो इट मींस यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुए हैं. So it is not necessary that every clause would be independent or has complete sense. Yes, जरूरी नहीं है कि हर clause का complete meaning निकलेगा ही. जैसे for example you can see the train had left when I reached the station. Fine, the train had left when I reached the station. तो ये क्या शो हो रहा है हमें? यहाँ पे दो क्लॉज है, अंडरलाइन किए हुए आपके लिए मैंने. आप देखिए कौन से हैं. First one is the train had left, and the second one is I reached the station. Fine. तो first वाले का meaning अगर हम देखें तो क्या है? The train had left, train जा चुकी थी. Yes, it has a complete meaning. और second क्या है? When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. क्या हुआ तब? मुझे क्या पता क्या हो. जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन आ रही थी, तो कोई एक्सीडेंट हो गया या बारिश हो गई, व्हाट हैपेंड वी डोंट नो. तो इसको कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें द ट्रेन हैड लेफ्ट वाले क्लॉज की जरूरत पड़ेगी. इट मींस the clause which has a complete meaning is called independent clause, or we can call it main clause or principal clause. And the clause which depends on independent clause or on the main clause or on the principal clause, that is called dependent clause. Okay, so finally we can conclude that a clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. Means what are the basic requirements? क्या होना ही चाहिए एक क्लॉज में? फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है.
Fine. A clause contains only one subject and one verb. It will have only one subject and one finite verb actually. Okay. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. हो सकता है subject उसमें hidden हो, लेकिन verb हमें clearly उसमें नजर आएगी. तो आप समझिए क्या होते हैं clauses. Clauses वो होते हैं जिसमें एक subject होगा और जिसमें एक verb होगी और verb भी क्या होगी, कौन सी होगी, finite verb. अगर एक सेंटेंस में दो बार फाइनाइट वर्ब्स आ रही हैं, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही बार आती है सिंपल सेंटेंस में. अगर दो बार आ रही है तो इट मींस इट इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, उसमें दो क्लॉजेस यूज हुए हैं, एंड देन इट विल बी ईदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फाइन. सो in a clause, group of words containing a subject and a predicate, and it functions as a member of complex or compound sentence. अगर ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं होगा तो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज ये पार्ट बन के आएगा. यू कैन सी द एग्जांपल्स. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. सो इट हैज अ सिंगल क्लॉज क्योंकि एक ही वर्ब है ग्रेजुएटेड. सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस एक्चुअली, है ना. आप इसे क्लॉज भी नहीं बोलेंगे, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. Second one, when I came here, I saw him. So here you can see came and saw. Though finite verbs using, so it is two. The sentence has two clauses in it. And the last one, when I came here, I saw him and he greeted me. So here we are using three verbs, three finite verbs. Came, then second clause may saw, and then third clause may greeted. So it means this is three clauses sentence. Okay, students, I hope the concept of clauses is very clear to you. Now you will be very easily understanding what are complex sentences and what are compound sentences.